Find the values for k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots. First, 2x squared plus kx plus 3 is equal to 0. Okay. So if you look at this question here, we need to find out the value of k. K की value find करनी है. And one important thing is given here, equal roots is given. So I hope you remember the condition for equal roots. So the condition for equal roots is, what is the condition for equal roots? Sir, its discriminant b square minus 4ac is equal to 0. Yes, it's b square minus 4ac is equal to 0 is the condition, right? Now we need to find out the value of a, b and c here. What is a? Anyone? 2. 2. What is b? K. K. What is c? 3. Yes. Now a is 2, b is k, c is 3. For equal roots, this is the condition. Now let us put all the values here in this. इसमें values put करेंगे. b की जगह पे k रख दिया मैंने -4, a की जगह पे 2 and c की जगह पे 3 is equal to 0. So it can be written as k square equal to 4 to the 8, 8 3 the 24. So k is equal to root of 24. It can be written as 2 root 6 is the answer in this case. So like this we can find out the value of k. And if you look at the second part here, in the second part it is given that, so first of all we need to a little bit solve this second part, make it into the standard form. So अगर आप bracket open करेंगे तो this become kx square and kx multiplied with -2, so -2 kx plus c plus 6 equal to 0. So what is a in this case? K. Yes. What is b in this case? -2. Minus 2k, right? So k is the value along with the sign attached with x. What is c? 6. 6. Okay. Again, if the roots are equal, the same condition, b square minus 4ac equal to 0. Put the value of b square. B is given -2k. B square minus 4 into a into c equal to 0. It can be written as 4k square equal to 6 4 24k. Or I can write like this also. It can be written as 4k square minus 24k like this. So if I take 4k common from here, so inside the bracket it is k minus 6, right? So if it is k minus 6, so ये 0 के इक्वल आ रहा है. 0 कब आया होगा? Either this 4k is 0 और k minus 6 is 0. So अगर आप 4k को 0 लेंगे या k minus 6 को 0 लेंगे, so from here k equal to 0 by 4, or we can say that k equal to 0 in this case, right? And from here k equal to 6. So k की दो वैल्यू हो सकती है when k is 0 and when k is 6. But we do not take this 0. Why? We do not take k equal to 0. Why? Because if you look at this equation here, this equation. So in this equation, if k becomes 0, so it is not a quadratic equation. तो फिर ये quadratic equation ही नहीं रहेगी. तो x स्क्वायर का जो coefficient है a, जो यहाँ पे k के इक्वल है, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. तो हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म देखी थी वहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म में a is not equal to 0 होता था, right? I hope this question is clear to you all. Now let's move to the next question. Look at this question number 3. Daksh Tyagi, am I audible to you? Daksh Tyagi. Yes or no? Daksh. Okay. Deepa. Yes, sir.
Okay, am I audible to you? Yes. Okay. Deepak, could you please read this question on the screen? Look at this question 3. Is it possible to design a rectangular mango guava whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If so, find its length and breadth. Okay, rectangular mango grove. तो ये बनाना है, ये एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है, ABCD, right? So it is given that the length is twice its breadth. Look at here. So the length is twice its breadth. So suppose the length is x. So what is the breadth in this case? According to this given statement, if length is equal to X by 2. x meter, so length is twice its breadth. अच्छा हाँ, x by 2, right? But we need to suppose, ये मैंने reverse suppose कर लिया. Suppose breadth suppose करते हैं. X by 2 is right, so then it is easy to understand it. So in this case, suppose breadth is equal to x meter. So if breadth is x meter, so according to the given statement in the question, so the length in that case is, length is twice its 2x. breadth. Yes, length is 2x. So this is the length. So length is 2x. So we need to check, is it possible to make such type of rectangle when the area is 800 meter square? So we know that area is equal to length into breadth. So according to the given condition in the question, so length is, area is given 800 meter square. So ये relation मैं लेता हूँ, this relation, and let me write it on this side. So length की जगह पे रखा मैंने 2x, breadth की जगह पे मैंने रखा x, is equal to length की जगह पे 2x, and at the place of breadth x is equal to 800, right? Now it can be written as 2x square is equal to 800. So first of all, we need to check, is it possible this type of triangle, this type of rectangle is possible? क्या possible है, इसको बनाया जा सकता है? तो अगर आप देखेंगे तो this 2 cancel this, it become 400. So it become x square equal to 400, or we can say that x is equal to root of 400 is equal to 20 meter. So length is coming positive, and it may come in the negative also, so we select positive. So yes, it is possible. ये possible है. Yes, it is possible. And what is the length is 20, and what is the breadth is 20. Yes, it is possible, and breadth is 20, and length is twice 20 का twice 40 meter. So one more thing we need to do in this question is to check, is it possible or not. So the way we have to select like this, एक हम लोग ये वाला way लेंगे. Shift this minus 400 on this side. A को लीजिए 1, what is B in this case 0, and what is C is equal to minus 400. So check discriminant हम check करेंगे possibility की check करने के लिए. If discriminant is 0 or it is greater than 0, so real roots आएंगे. So in that case it's possible, क्योंकि length non real नहीं हो सकती है, length breadth. So discriminant check करते हैं, b square minus 4ac. Now put the value, b is 0, minus 4, a 1 है, और ये minus 400. So what is discriminant? It comes out to be 1600. तो ये कैसा आ रहा है? It is greater than 0. ये 0 से बड़ा आ रहा है. So have real and distinct root. तो रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे. सो अगर रूट्स रियल हैं तो ये पॉसिबल होगा. देन आफ्टर दिस इस स्टेटमेंट के बाद हम लोग यहाँ पे मूव करेंगे ऊपर, और हम लोग ये वाली लाइन यहाँ से लिखेंगे, यस इट्स पॉसिबल, यस इट्स पॉसिबल. एंड हम लोग फाइंड यहीं से कर सकते हैं 20 मीटर लाइक दिस, राइट. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ let's move to the next question.
Look at this question number 4. Dipanshu Sharma, could you please read this question on the screen? Is the following situation possible? If so, determine their present ages. The sum of ages of two friends is 20 years. Four years ago, the product of their ages in years was 48. Okay. So the sum of the ages of two friends is 20 years. So let age of one friend एक फ्रेंड की एज अगर मैंने x ईयर लेट कर ली है, प्रेजेंट एज, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट एज, राइट? So then what is the age of second friend if the 20 sum is minus given 10. 20? What is the age of second friend if sum is given 20? 20 minus x. 20 minus x. Yes, it's 20 minus x. ऐसा क्यों किया हम लोगों ने? क्योंकि दोनों की एज का सम 20 आ रहा है, तो अब आप इसको x को और 20 माइनस एक्स को जब आप ऐड करेंगे तो x से x कट जाएगा, इट कम्स आउट टू बी 20, राइट? एंड इफ इन द क्वेश्चन इज गिवन लाइक दैट द सम ऑफ दिस टू थिंग इज दिस, सो एक चीज को आप x मानते हैं और सेकंड थिंग को, जैसे यहाँ पे 20 था, तो 20 में से x को अगर आप निकाल दें तो जो रिमेनिंग चीज बचेगी दैट इज द सेकंड वन, राइट? नाउ 4 ईयर अगो, अब ये 4 साल पहले की बात है, तो 4 साल पहले इनकी एज भी डिफरेंट रही होंगी। अब ये तो प्रेजेंट एज थी, यहाँ पे इनकी प्रेजेंट एज, आज की तारीख में जो एज है, अब 4 साल पहले इनकी एज जो होगी, एज ऑफ वन फ्रेंड, तो इसको मैं फर्स्ट फ्रेंड बोल देता हूं, फर्स्ट फ्रेंड एज एंड सेकंड फ्रेंड एज। व्हाट इज द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड 4 ईयर अगो? x minus 4. यस, 4 साल कम होगी, अभी प्रेजेंट में x है तो होगी x minus 4, एंड द सेकंड फ्रेंड एज इज 20 minus x 20 minus minus x minus 4. यस, तो 20 माइनस एक्स प्रेजेंट एज है, इसमें से 4 माइनस कर देते हैं, और इट कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस 20 माइनस 4 16 माइनस x years, right? Now if you read the question here, the product of their ages in years was 48. तो 4 साल पहले की जो एज है इनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो 48 के इक्वल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो एज कितनी है? x माइनस 4 एंड 16 माइनस x, इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो इट्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू 48. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट? नाउ लेट अस सॉल्व these equations. So if I open the bracket, it can be written as 16x minus x square minus 64 plus 4x is equal to 48. Now simplify it. X square 16 plus 4 20, इधर लेके जाएंगे तो minus 20x, 64 को इधर लेके जाएंगे तो it become plus 112 equal to 0. Now let us solve it by splitting the middle term method. एक्स स्क्वायर बनाया, यहाँ पे ब्रैकेट बनाया, x प्लस 112 इज इक्वल टू 0. ओके, सो बिफोर सोल्विंग इट, सो चेक भी कर लेते हैं इज दिस कंडीशन पॉसिबल और नॉट. सो इन द क्वेश्चन दे आस्क दैट इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस. अगर फॉलोइंग कंडीशन पॉसिबल है तब आप उसकी प्रेजेंट एजेस फाइंड करें. So to check the condition possible, what we need to find? We need to find discriminant. Discriminant. Yes. अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा तब एज पॉसिबल होंगी, अदरवाइज नॉट. सो व्हाट इज a in this case? What is b in this case? Minus Minus 20. 20. Minus 20, yes. And what is c? 112. 112. Yes, right. So find the discriminant b square minus 4ac. So b square is minus 20 square minus 4 into 1 into 112. It's become 400 minus 448. So it comes out to be minus 48. So it's less than equal to 0. So it is having no real roots. कोई भी real age नहीं होगी उनकी, right? So it's not, so what the statement you have to write in the last, it's not possible. So this type of situation is not possible.
So if the situation is not possible, so we do not need to find out any roots, right? I hope this question is clear to you all. Yes, sir. Now let's move to the next question. Look at this question number 5. Mansi, am I audible to you? Mansi, Yes, sir. Mansi, could you please read this question on the screen? If it's possible to design a rectangular park of parameter 80 meter and area 400 meter square, if so, find its length and breadth. Okay. सो एरिया रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं, ब्रेथ की बात कर रहे हैं, पैरामीटर गिवन है, एरिया गिवन है, क्या ये पॉसिबल है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक इज इट पॉसिबल और नॉट. सो पैरामीटर इज गिवन 80 मीटर एंड area is given 400 meter square. So first of all we need to let the things, let length is equal to x, length को x ले लेते हैं एंड रिलेशन अभी कुछ गिवन नहीं है तो ब्रेथ को भी पूरा टाइम बीइंग इसको मैं y मान लेता हूं. नाउ come here, if you look at this condition here, because of this condition parameter, so what is the parameter of that rectangle? Formula for parameter of rectangle is 2 into L plus B. okay, 2 into L plus B. So we can say that 2x plus y, length is x and breadth is y here, it's given 80. So we can say that x plus y is equal to, these two cancel this, it become 40, or we can say that x plus y is equal to 40, or from here we can say that y is equal to 40 minus x. ओके, सो हमने सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस कर लिया, y को फाइंड कर लिया x की फॉर्म में. ओके, सो देन y को लिखेंगे हम लोग 40 माइनस एक्स. सो y ब्रेथ इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स मीटर एंड लेंथ इज x मीटर. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एरिया. एरिया गिवन है 400. So let us use this area 400. Now according to the question, so area कितना होगा? लेंथ x है और ब्रेथ है 40 माइनस x. So length into breadth is equal to 400, right? Open the brackets. Then shift it on the right side. Now first of all we need to check is it this condition possible or not. So for that we need to find out the ABC. What is A in this case? 1 B, minus 40, C. 400. Yes. So now to find out the possibility, possible है या नहीं है, तो हमें find करना पड़ेगा discriminant. Discriminant is denoted by D and it's equal to B square minus 4AC. So B square है यहाँ पे 40 square minus 40 square minus 4 into A है 1 और ये है 400. So 4 4 the 16 and it's also 16. So it comes out to be 0. So discriminant comes out to be 0 in this case. So it's, if it is 0, if discriminant is 0, what is the nature of the roots? Real and equal. Yes, roots are real and equal roots. And what is the value of x in that case? X is equal to minus b upon 2a. How it comes? कैसे आई है? तो let me tell you this thing once again. So quadratic formula था हमारे पास, देखिए x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac. So I am applying only the quadratic formula. Quadratic formula लगाया है. अब हमने बोला कि b square minus 4ac 0 हो गया है डिस्क्रिमिनेंट, तो ये 0 का रूट हो जाएगा, राइट? अगर ये 0 का रूट हो जाएगा तो 0 का रूट तो 0 ही होता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस बी अपॉन 2a. तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाएंगे व्हेन द रूट्स आर इक्वल. सो माइनस बी अपॉन 2a. सो व्हाट इज b हियर इन दिस केस? इट्स minus 40
So put it here -40 upon 2 into A. A is 1, तो ये आएगा 80 नहीं, कैंसिल होगा तो ये आएगा 20. सो x की वैल्यू आ रही है 20. ठीक है जी. सो पॉसिबल भी है और so therefore yes it's possible. ऐसा पॉसिबल भी है. It's possible. And what is length in this case is 20 meter, and breadth in this case is, breadth होता हमारे पास 40 minus x. So what is x? X is 20. So put x is here. So breadth is also 20 meter. Right? I hope this question is clear to you. ये समझ में आया आपको कि कैसे चेक करना है कि पॉसिबल है या नहीं है, और फिर अगर पॉसिबल है तो कैसे उसको फाइंड आउट करना है. सो ये हम लोग हेल्प लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट की. डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac. उसको चेक करते हैं. इफ इट इज रियल देन इट्स पॉसिबल, एंड इफ इट इज नॉन रियल, नॉन रियल कब होता है? जब 0 से छोटा आता है. राइट? सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज. This is the last exercise of this chapter, and I hope this exercise is clear to you all now.